Mahendra Singh Dhoni's recent tribute to the security forces, where he was he spotted an army insignia in Team India's opening match in the World Cup against South Africa, has not gone down well with the International Cricket Council. The international cricketing body has asked BCCI to get the badge removed from Dhoni's gloves. The ICC rules state equipment and clothing regulations do not permit the display of messages that relate to political, religious or racial activities or causes during an international match. This is not the first time when the former Indian cricketer has professed his love for the forces. Dhoni wore a camouflage gloves in several international matches. Team India also, along with Mahendra Singh Dhoni, were seen sporting camouflage caps as a tribute to Pulwama martyrs in a match against Australia in March. All right, let me now bring in one of the most popular, the famous top Indian footballer, Bhaichung Bhutia, who is joining us on the phone line for more on this. Baichung, thank you so much for speaking to us here on India Today. First of all, what are your views on this controversy which is raging on right now? People giving it a very patriotic, nationalistic turn as well. ICC quoting the rules. No, I think it's definitely a wonderful gesture from Dhoni. But at the same time, I think it's important to follow and obey rules and regulation and laws of the game. So, if the laws of cricket, I'm not expert in cricket, so if the laws of cricket and laws and rules of cricket does not permit, then I think as a player he should not be wearing it, because if you start somewhere and then I think open a lot of other controversies in the future as well. So I think for every player, no matter how big or small the player is, the laws of the game is very, very important, and that has to be followed. ICC rules very clearly quote that they do not allow any sort of political messaging or any other messaging as far as the kit is concerned during international games. Yes, the gesture is appreciable, but Baichung, do you think that all those right now clamoring behind Mahendra Singh Dhoni and giving it a nationalistic twist, saying that ICC is disrespecting India, they should also understand the spirit of the game? No, I think I can understand people here, I think, and we all feel very patriotic about our country, and we all, I personally can understand people's sentiment. But at the same time, as you said, it's important to really respect the laws of the game, and I'm sure, as I said, I'm sure Dhoni might be aware of laws of the game of cricket, and if the laws of the game allows it, then I'm sure he should wear it. And for any player, as I said again, he has to go by the laws of the game, and that is very, very important. And I think it's important we can be still sentimental and patriotic, but at the end of the day, I think as a player, nothing is above respecting and honoring the laws. We are getting in reports that possibly under pressure of the public sentiment, the BCCI is going to request ICC to in fact let Dhoni continue with these gloves. What would be your advice to the cricketing body in India? I think it's, in fact, it's very, very dangerous, because cricket right now is, though being an Indian, I do feel that BCCI is, I think, really trying to take a lot of, I think, I won't say advantage, but they have to respect other countries as well, because it's because you spend, you have the highest commercial deals, you have, the money in cricket today is coming only from India, and you control the market, because cricket today without India team, I think it's a dead sport, and commercially as well, it's almost zero. And I think that's where BCCI is trying to take a lot of advantage. But I think at the end of the day, I think they should be fair as well. What is rule and law has to be respected. It's not because you have, you are the richest body, and because of your country, the sport is surviving. That doesn't mean you take entire advantage and dictate what you want in the sport. That, I think, is not good for the sport. Any advice and a message for Mahendra Singh Dhoni and Team India, who are in the World Cup right now? I think for Dhoni, I think he just needs to focus and keep playing the way he's been playing and leading, playing for India. And I think it's just for
focus, get the World Cup home. That is what is more important. And I think this will go on. You know, I'm sure he has an experience. He's one of the best captains we've ever seen, and I think his experience is there. I don't think this will affect, and I'm sure he's going to be focused and he's going to be playing well as he's been doing. Bhaichung Bhutia, thank you so much for talking to us here on India Today and sharing your views. Very, very important, in fact, what Bhaichung Bhutia, one of the most celebrated Indian footballer, said here on India Today. Rules should be respected. Spirit of the game should be respected, no matter how important, how wealthy the BCCI is. You can't take these liberties as far as the rules of the game are concerned. My colleague Radhika Tongar also with me. Radhika, Bhaichung Bhutia very clear about one fact. Yes, the emotions are there. People should respect the security forces. There are other ways of showing it. If there are rules which do not permit, as far as the ICC is concerned, those should be respected by Team India and Mahendra Singh Dhoni. You know, Ankit, you're absolutely right out there. In fact, the sentiments that have been echoed by Baichung as well. Remember, this is not the first time that Team India has also done something like this. When they wanted to wear those camouflage hats in a match in India, they did take permission from the ICC, and the ICC gave it. So it's not like the team wasn't aware that to sport a symbol, whichever way they want, whatever they support, they Radhika, I'm sorry, I'm interrupting you here. Just stay on with me. We are now being joined by Olympic medalist Sushil Kumar, wrestler, who is joining us on the broadcast. Sushil ji, बहुत-बहुत शुक्रिया. आपको क्या लगता है सर इस पूरी कंट्रोवर्सी के बारे में? आईसीसी ने बड़े क्लियरली बोला है कि कुछ रूल्स और रेगुलेशन होते हैं इंटरनेशनल मैचेस के, और उसके खिलाफ जाता है महेंद्र सिंह धोनी का जो इंसिग्निया उन्होंने अपने ग्लव पे पहना है. क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो है जी धोनी भाई को बहुत बधाई दूंगा. वो देश के लिए खेलने गए हुए हैं और उनको कांग्रेचुलेशन बोलूंगा कि अच्छा होकर के आए. वहाँ बेस्ट ऑफ लक बोलूंगा कि अच्छा होकर के आए. दूसरा मैं बस यही कहूंगा कि उन्होंने, एक खिलाड़ी है, खिलाड़ी के भाव होते हैं देश के प्रति, उसकी फौज के प्रति. तो धोनी भाई फौज से जुड़े भी हुए हैं, तो मेरे ख्याल से उन्होंने इसी तरीके से पहना होगा कि फौज का भी मोटिवेशन बना रहे और मेरे को वो जो जज्बा है वो मिलता रहे. और ये बहुत छोटी बातें होती हैं. मेरे ख्याल से किसी लोगों ने शिकायत की होगी, उसी के आधार पर बीसीसीआई ने ये काम किया होगा. क्योंकि हम भी ओलंपिक खेलते रहे हैं और मैं सेल का हमेशा लगा के लोगों खेलता रहा हूँ, तो किसी ने भी मेरे को नहीं रोका है. जब कोई आदमी इंटरफेयर करता है तो ही ये चीजें होती है. तो किसी ने इंटरफेयर किया होगा, इसी कारण बीसीसीआई ने ये कदम उठाया. क्यों आपको लगता है सर, कौन इंटरफेयर करेगा? आपका इशारा किसकी तरफ है? अभी कुछ लोग बोल रहे थे कि पाकिस्तान का कोई मंत्री है वो ज्यादा इस पे बोल रहा है. तो मैं तो यही कहूँगा कि उन्हीं से किसी लोगों ने वो शिकायत की होगी. और ये खिलाड़ी पे दबाव बनाने की बात है, क्योंकि खिलाड़ी हमारे जो धोनी भाई है वो देश का महान खिलाड़ी है और बहुत सीनियर खिलाड़ी है. तो उन्होंने ये सोचा होगा कि खिलाड़ी पर दबाव बना के रखो. सुशील भाई, लेकिन आईसीसी का जो रूल्स हैं बड़े क्लियर हैं कि आप इस तरीके की कुछ भी मैसेजिंग नहीं कर सकते. पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं, उन्होंने पैलेस्टाइन के लिए एक बार अपने हाथ में पहना था, उसके बाद उनको सस्पेंड कर दिया गया था. आईसीसी ने बड़े क्लियरली बोला था कि आप इस तरीके का नहीं कर सकते. अगर एक को अलाउ करेंगे तो बहुत लोगों को अलाउ किया जाएगा. तो आपको लगता है कि आपकी भावना ठीक है, लेकिन रूल्स के साथ गेम खेलना पड़ता है? आप स्पोर्ट्स पर्सन है. बिल्कुल ठीक है, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ आपसे कि रूल के हिसाब से खेलना चाहिए. और जब कोई संस्था जिस रूल को बना दे उसी के माध्यम से उसको चलाना चाहिए और चलना चाहिए. खिलाड़ी को भी चलना चाहिए. मगर ये गेम के बाद हुआ ना ये सारी चीजें, तो ना जो मैच हुआ उसके बाद ही तो ये चीजें हुई हैं. तो बीच में भी ये चीजें हो सकती थी, बीच में भी ये प्रोटेस्ट उठ सकता था. और बीसीसीआई के में अधिकार है कि बीच में भी उसको निकलवा सकते थे, मैच के बीच में भी. तो ये नहीं है, ये तो बाद में ही कुछ ये हुआ है. और मैं धोनी भाई को सपोर्ट करता हूँ कि उन्होंने देश के को हमेशा गौरवान्वित किया है और वो देश के लिए खेलने गए. सुशील भाई, एक सेकंड अगर आप रुके, मैं मिल्खा सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं ब्रॉडकास्ट पे. मैं आपको सुशील, आपको जाना है, इसीलिए मैं आपसे बस आखिरी सवाल ये पूछना चाह रहा था कि क्या आपको लगता है कि खुद अब शायद ये कंट्रोवर्सी इस तरह की हो गई है और रूल्स बताए जा रहे हैं, तो आने वाले मैच में धोनी को शायद ये ग्लव्स नहीं यूज करने चाहिए, जबरदस्ती की कंट्रोवर्सी में ना पड़ के सिर्फ अपने गेम पे ध्यान देना चाहिए वर्ल्ड कप लाने के लिए? बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं वो और बहुत सुलझे हुए खिलाड़ी हैं. वो बिल्कुल कंट्रोवर्सी में नहीं बढ़ेंगे और वो अपने माइंड से अच्छा ही करेंगे और वो देश को गौरवान्वित करेंगे. धन्यवाद भाई. सुशील कुमार, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए. वी आर ऑल्सो बीइंग जॉइंड बाय in fact legendary sprinter from India, Milkha Singh, who is with us on the phone line. सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए. आपके क्या व्यूज हैं इस पूरी कंट्रोवर्सी पे?
बच्चे को धोनी ने कोई बुरा काम तो नहीं किया है। मैं तो समझता हूँ कि उसने आर्मी को और जो हमारे जवान हैं, ऑफिसर्स हैं आर्मी के, उनको इज्जत और मान दिया है। इसमें क्या बुरी बात है? अगर आज मिल्खा सिंह का नाम दुनिया भर में है, इंडिया का नाम दुनिया भर में है, तो वो आर्मी की वजह से है। तो मैं कहता हूँ धोनी ने कोई बुरा काम नहीं किया, बहुत अच्छा काम किया उसने। अगर ये लोगो लगाया है तो क्या हो गया? अगर इसमें क्या बुरी बात की है उसने? तो ये बोर्ड को सोचना चाहिए, देखना चाहिए। जो भी लोग ये रूल पे ये चीजें उठा रहे हैं, तो मैं तो समझता हूँ कि उनको समझना चाहिए कि इन्होंने तो उसने हमारी आर्मी के जवानों का इज्जत और मान बढ़ाया है, कोई बुरी बात नहीं की है। पर मिल्खा सिंह जी, ये भाईचुंग भूटिया भी हमारे साथ थे अभी, उन्होंने भी बोला कि कुछ रूल्स होते हैं। आपकी भावना बिल्कुल सही है। रूल्स क्या है? रूल्स क्या है? अगर लोगो लगा भी लिया आर्मी का, तो क्या आर्मी ने उसको, आपको मालूम होना चाहिए कि लेफ्टिनेंट कर्नल का ऑनररी रैंक दिया हुआ है उसने आर्मी ने धोनी को। अगर उसने ये काम किया है तो मैं समझता हूँ कि कोई बुरी बात नहीं है। उनको इस तरह से सीरियस नहीं लेना चाहिए चीजों को। आईसीसी के रूल्स परमिट नहीं करते हैं किसी भी तरह की इंसिग्निया मैसेजिंग। नहीं, ये एक पाकिस्तान के क्रिकेटर को उन्होंने सस्पेंड भी किया था इसी वजह से। नहीं, बिल्कुल गलत बात है। मैं समझता हूँ कि ये जो उनको सोचना चाहिए इस बात के लिए, ये जो उसने किया है अच्छा किया है, कोई बुरी बात नहीं की है। सर, आपको लगता है कि झुकना नहीं चाहिए बीसीसीआई को, धोनी को दोबारा यही पहन के जाना चाहिए अपने मैच में? नहीं रोकना चाहिए, बिल्कुल नहीं रोकना चाहिए धोनी को। अगर लगाता तो लगाने दे। वो जो लोग हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, हिफाजत कर रहे हैं, उनके लिए अगर वो ये काम करता है तो अच्छी बात है, बुरी बात क्या है? बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। वी आर ऑल्सो बीइंग जॉइंड बाय मिस्टर चंचल भट्टाचार्य। ही इज इन फैक्ट यूज्ड टू बी द कोच फॉर महेंद्र सिंह धोनी। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आपको इस पूरी कंट्रोवर्सी पे आपकी क्या राय है? आईसीसी कह रही है रूल्स का उल्लंघन कर रहे हैं महेंद्र सिंह धोनी। नहीं, देखिए, उल्लंघन की बात नहीं है। ये एक देश की जो एक्चुअली महेंद्र सिंह धोनी, आपको पता होगा कि वो आर्मी में भी लेफ्टिनेंट कर्नल का पोस्ट में है, ऑनरेरी है, ठीक है। लेकिन उनका जो एक फर्ज बनता है देश के प्रति, उन्होंने जब भी कुछ किया है, वो आर्मी ड्रेस बोलिए या आर्मी, ऐसा कुछ नहीं, इंटेंशनली उसको कुछ नहीं है। अगर आईसीसी को लगता है तो एक इसको जो है कि उसमें धोनी की अपना जो भावना है, वो भावना की कदर करनी चाहिए। सर, लेकिन भावना के साथ साथ जो भी क्रिकेट गेम है वो रूल से चलता है। आईसीसी के कुछ रूल्स हैं जो इस तरह की चीजें अलाउ नहीं करते हैं। तो क्या महेंद्र सिंह धोनी, जी हां, उनके जज्बे का बिल्कुल रिस्पेक्ट है, लेकिन क्या महेंद्र सिंह धोनी को रूल्स से नहीं खेलना चाहिए? अगर आईसीसी नहीं अपने टूर्नामेंट में परमिट करता है तो क्या इस तरह की चीजें ठीक है? नहीं, अगर आईसीसी अगर इस तरह से कुछ ऐसा बात है, अगर परमिट नहीं करती है, तो हमको नहीं लगता ये बहुत बड़ा इशू है, वो हटा देगा। आपको लगता है कहीं ना कहीं इससे इतने बड़े टूर्नामेंट में इस धोनी खेल रहे हैं, इस तरह की कंट्रोवर्सी से थोड़ा बहुत परेशानी होगी, ध्यान इस पर जाएगा, कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम होगी? नहीं, ऐसा बात नहीं है, ऐसा बात नहीं है। छोटी सी बात है, इसको बड़ा बना दिया गया। उन्होंने वो ऐसा सोच के नहीं, उन्होंने सम्मान दिया, एक आर्मी को सम्मान दिया है, और कोई बात नहीं है इसमें। भावना और जज्बा को कदर करनी चाहिए। ऑल राइट, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर स्पीकिंग टू अस। लेट मी सी इफ राधिका इज स्टिल विद अस on the broadcast. All right, Radhika, as of now, is not with us. So very clearly, you heard, in fact, Bhaichung Bhutia, who said respect and the message that Mahendra Singh Dhoni wanted to give. That's there. That's on one hand, and every player, in fact, respects the country and the Indian Army. But there are certain rules to play by. There can't be an exception. Meanwhile, Sushil Kumar, Olympic wrestler, and also former India legendary sprinter Milkha Singh, both of them in support of Mahendra Singh Dhoni. Now, Mahendra Singh Dhoni's security forces, his respect and love for security forces is known. The Indian wicket-keeper, who is also an honorary lieutenant colonel in the Territorial Army, donned the gloves with an Indian Army insignia over it. In fact, Dhoni's act won hearts of many fans in India, but did not go down well with the ICC. Here's a complete report on this controversy. Global cricket governing body objects to MS Dhoni's love for security forces. The Indian wicket-keeper was seen donning the gloves, which had the Balidan badge. Balidan badge is the regimental dagger insignia of Indian Para Special Forces.
The reason for ICC's objection is one of its regulation, which says the ICC equipment and clothing regulations do not permit the display of messages that relate to political, religious or racial activities or causes during an international match. This is not the first time Dhoni has shown his love for the forces. Earlier this year at Ranchi, in an ODI against Australia, Indian team donned army camouflage caps. This was to pay respect to the martyrs of Pulwama attack. Not just that, Indian team also donated their match fee to the National Defence Fund. Later, Pakistan Cricket Board raised objection to the move, which was initiated by MS Dhoni. Remember, Dhoni has been conferred an honorary rank of Lieutenant Colonel in the Parachute Regiment in 2011. He had also undergone training under the Para Brigade in 2015. Dhoni and BCCI are yet to respond, but clearly ICC's objection has raised many eyebrows. Sports Bureau, India Today. Well, the ICC is playing by the rule book. Of course, if you look at the ICC regulations for ICC tournaments and international cricket, they clearly state that no religious, political or personal message can go out while you're wearing a kit or your clothing. Remember, Moeen Ali was banned. He was also told to take off the wristbands that he was wearing in 2014, which said save Gaza, save Palestine. And that was when the English Cricket Board also stood up with Moeen Ali. But the ICC put their foot down. This time also, Mahendra Singh Dhoni has just been told, he's not been warned, he's not been fined, he's not been banned. He's been told not to wear that logo on his gloves, and the Indians will, of course, comply with that. This is an ICC tournament. You can say that there's nothing wrong in it, it doesn't offend anyone. But then don't forget the fact that there are sponsors, there's ambush marketing. And if they permit Dhoni, there would be other players who would also be wanting to do the same or any other stuff. So the ICC has played by the book, and I think they are well within the right to call up Dhoni and tell him not to wear the gloves in future. Thanks for watching the video. For more such news and updates, please like, share and subscribe to India Today. Also check out our other great videos from our channel. We know you will love to.